Good evening, Chinky. Good evening, dear all. I hope you all are doing well. Good evening, Chinky. Good evening, hike mentors. Do you know what I just learned? Good evening, Chirag. Good evening, Simran. So, how's your preparation, guys? Thank you so much, Aman, hike mentors, for giving such good compliments to us. Fix fair, hello, friend. Very good evening, Jasmeet Kaur. So, guys, now let's understand what is IELTS writing task 1 and what are the tips for this task. I just would like to share today how to write line graph, right, and table. So in this video you are going to watch how to write line and table graph for IELTS writing task 1. Good evening, Pinky. So now let's look at what are the tips and tricks, right? So first understand what are the tips and tricks here. So the first step is to look carefully at the information in the line graph, right? जो सबसे पहला काम है आपका, that is to look at the main information in the line graph. Don't rush through this step, means while you are looking out the information, kindly don't rush, right? बहुत सारे students होते हैं एकदम से काफी ज्यादा haste करते हैं, जल्दी करते हैं, so that in that time they might miss some information. So I would strongly advise you, kindly don't do this, just be careful. So make sure you have understand the graph before you start to write. So this is one of the most important key. It is very necessary for the students to understand the graph before they are going to write. जो वो लिख रहे हैं, जिस graph के बारे में वो information present कर रहे हैं, so like it's very necessary for them to read that carefully. So underline important words in the question and circle important points on the graph, right? So सबसे पहला जो काम आपको करना है, next जो step है, सबसे पहला आपने पढ़ना है graph को ध्यान से, जिसके बारे में आप लिख रहे हैं. Underline important word in the question and circle
इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, राइट? जो मेन पॉइंट्स हैं सर्कल के, आप उनको एक बार ध्यान से पढ़ें और फिर आपने क्या करना है, उसको अच्छे तरीके से सर्कल करना है. थर्ड स्टेप, आइडेंटिफाई व्हाट की इंफॉर्मेशन इज बीइंग प्रेजेंटेड इन द ग्राफ. तो आपने आइडेंटिफाई करना कि कौन सा की प्रेजेंट किया गया है ग्राफ के अंदर, एंड विच इंपॉर्टेंट डेट्स, फिगर्स और striking features you will need to write about, right? Because in the graph you would be given lot of information. तो lot of information अगर आपके पास है, so it is not always necessary for you to present every sort of information. So वहां पे फोकस जो मेनली करना है आपने, वो डेट्स के ऊपर फोकस करना है, फिगर्स पे आपका फोकस होना चाहिए, और जो स्ट्राइकिंग फीचर्स हैं उसके, मींस जो इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, राइट? सो यू नीड टू डिस्क्राइब दैट sorts of things. Next is plan your writing. So once you have done this, so then you need to plan it. You can usually divide it into 3 paragraphs, right? So usually हम IELTS try squan जैसे लिखते हैं, तो 3 पैराग्राफ आप उसके बनाएं. The first should be for the introduction, and the second should be for the main body paragraph, and then the second should be the second main body paragraph, right? Even though the candidate can go with the even though the candidate can go next with the summary as well. If the line graph has more than 2 lines, this is the important point to understand here. If the line graph has more than 2 lines, try to arrange the data into 2 to 3 groups. So it is necessary, if it has the 2 lines, so then try to arrange the data into 2 to 3 sentences. अगर 2 से ज़्यादा लाइन है तो 2 या 3 आप उसके ग्रुप्स बना के फिर करें. For example, you could divide the data into rising trends and falling trends, right? So good evening Sakshi ma'am. So like if the trends are there, so you can describe that in the trend in the rising as well as in the falling trend. Further is there, look carefully at the time frame that the graph covers, right? So it's very necessary for you, the graph is for the 20 minutes, so it's necessary for you to look at the time frame, right? टाइम को आपने ध्यान रखना है कि ग्राफ जो है वो 20 मिनट्स के अंदर कवर करना है, एंड वर्क आउट द टेंसेस यू नीड टू यूज. फिर सेकंड जो स्टेप है वो आपने देखना है कि कौन सा टेंस आपने यूज करना है, प्रेजेंट है, पास्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट है, फ्यूचर है. ऑल्दो यू हैव टू फोकस ऑन ऑल 12 फॉर्मेशंस. लाइन ग्राफ के अंदर स्पेशली ये चीज चलती है, जब आप ग्राफ लिख रहे होते हो तो 12 फॉर्मेशंस, जैसे सिंपल प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट सिंपल, then you can talk about past continuous, past perfect continuous, similarly as the future tense. So आपने 12 sentence के formations को ध्यान करके आपने ग्राफ लिखना है. If you would present the information grammatically, right, with the grammatical error, sorry, right, so you would lose score. So it's very necessary, kindly don't attempt such kind of things. So being with the introductory sentence that describes the graph in general terms, but don't repeat the exact wording of the question. So guys, it is very important for you that you have to paraphrase the information. Means जो sentence आपके पास लिखा आता है ग्राफ के अंदर, let's take an example. जो ग्राफ है, the given graph shows the proportion of people who worked in agriculture sector. So you need to paraphrase this complete sentence, right? So paraphrasing is very necessary. If you would keep repeating the same words of the examiner, then obviously you would lose score. So kindly don't attempt such short of things. So be aware about this fact. You have to focus on this introductory sentence. Further, then describe 1 or 2 general trend shown in the graph, right? उसके बाद में जो उसका जनरल ट्रेंड है वो आपने शो करना है. डोंट गो इनटू द डिटेल्स. स्टार्टिंग में बिल्कुल जो स्टार्ट करते हैं आप इंट्रोडक्टरी, तो वहां पे आपने बिल्कुल डिटेल में नहीं जाना. जस्ट रिपोर्ट द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रेंड यू सी व्हेन यू लुक एट द ग्राफ, राइट? जो उसका मेन ट्रेंड है, मेन इंफॉर्मेशन है, सिर्फ आपने उसके ऊपर फोकस करना है. 9th tip is the first main body paragraph, right? जो सबसे पहला बॉडी पैराग्राफ है, सिलेक्ट एंड राइट अबाउट द फीचर्स, राइट? सबसे पहले आपने क्या करना है कि जो पहले सिलेक्ट करना है कि आपने प्रेजेंट कौन से फीचर्स करने हैं, दैट आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग, राइट? सो जो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग उसके जो फैक्ट्स होते हैं, सो उनको जो है आपने एक्सप्लेन करना है. फर्दर
like I just stated an example for you, rising and falling trend, right? If it is increasing or decreasing, that is the important point. Or where the lines intersects, like if something is going up and down, so like when the lines like intersects, so which includes relevant data to support the point you make, right? So you need to include that sort of information there. Further, number 10, फोकस ऑन द जनरल डायरेक्शन ऑफ अ ट्रेन, राइट? हर एक जो ट्रेन है उसका एक जनरल डायरेक्शन होता है. डोंट राइट अबाउट ईच चेंज इन डायरेक्शन ऑफ अ लाइन. आपको हर एक उसके जो चेंज है, लाइकवाइज अब ये स्टार्ट होता है ऐसे, ये एक इंक्रीजिंग ट्रेंड है, सो दिस इज इंक्रीजिंग ट्रेंड. अब ये इस तरीके से अगर डाउन हो रहा है, बार बार अप है, बार बार डाउन है, बार बार अप है, बार बार डाउन है, सो उसको कंप्लीट हर एक स्टेज उसका लिखना necessary नहीं है. So kindly don't do this. Do not try to write about all the data in the line graph. अगर आप line graph में complete data लिखने के लिए बैठते हो तो word जो limit हैं that are gonna to be exceed. कविता दमन, the one. Good evening, ma'am. Thanks for your compliment. So the next is there. Don't include detail that are the irrelevant in the main frames, right? तो वो details आपने include नहीं करने जो irrelevant होते हैं, जिन information का requirement नहीं होता, तो वो आपने उसमें include नहीं करना है. Remember, do not try to analyze or explain the information in the graph, right? कोई भी information को आपने analyze नहीं करना है unnecessarily, और जो explain information है सिर्फ आप उसको explanation दोगे. Do any calculation just to describe and report it, right? तो आपने क्या है कि सिर्फ आप एक कैलकुलेशन बनाएं, मींस इंक्रीज अगर डिक्रीज कोई कुछ हुआ है. लेट्स टेक एन एग्जांपल. समथिंग वाज 70% एंड इट हैज डिक्लाइंड बाय 40%. तो वो 40% अगर डाउन में आया है तो वो कितना डाउन में आया, राइट? सो दैट इज द थिंग. फिर आपने सोचना है कि इसका फ्रैक्शन बनाना है या नंबर बनाना है या परसेंटेज बनाना है. दैट इज अ नेसेसरी थिंग. मेरी पिछली वीडियोस में मैंने नंबर्स और फ्रैक्शंस बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए थे. यू कैन गो टू माय बैक वीडियोस or you can see how the number and fractions are being changed. So that video you can see from there. So keep track of the time. आपने टाइम पे फोकस करना है. डोंट स्पेंड मोर देन 20 minutes on task 1. So task 1 is for the 20 minutes, and even though I would strongly advise you, do not spend more than 15 minutes on writing task 1. 15 minutes for the writing task 1 are very necessary, right? So 15 minutes is not a small time, right? So that's the quite enough time, and you need to write only 150, minimum 150 words are required. So I think 50 minutes are more than sufficient for writing 150 words. Keep in mind the criteria that the examiners use to mark your response, right? So as in my first video for the task 1 I explained you, there are the 4 marking criteria that the examiner follows, so you need to keep that in your mind. And for marking criteria, see about the academic writing task. So that's an in my notes that I'll send in the group, so you can see there, that is stated in the page number 181 there, 80, sorry. Now let's see what are the introductory verbs. So it's very necessary you should have the introductory verbs first, right? जो सबसे पहला सेंटेंस होता है आपके ग्राफ का, that is a introductory sentence, right? अब introductory sentence है तो introductory verbs की भी जरूरत होती है. So how you can write the introductory verb? So the very first is there, indicate. So what is indicate? The graph indicates the growth in the service sector and the decline in the manufacturing sector, right? So that's the use of indicate word. Show. The graph shows how 2 programs performed over a 10-year period. So that is a show, the use of show word. Next is compare. The graph compares changes in the annual rainfall in the 4 sites. Provide or give information or the provided. So the given graph provides information about XYZ you can talk about. So the growth of productivity for several firms. Further is provided data, means this graph provides data about 3 trends, right? So you can talk about like increasing, decreasing and fluctuating trend. So you can talk about something like this. You can use these words in there.
Further is describing trend. So describing trend, there are the different sorts of trends which are being used in IELTS writing task 1. So here हम बात करेंगे up के trend के बारे में, means increasing trend, right? So the word that I have stated over here are used for increasing trend. So the first is their rise, and guys, there is a difference in rise. So the first rise is a verb and second rise is a noun. So when you are describing any action, so rise is used as a verb, and when you are talking about any particular thing, means like let's take an example. There was a rise in the production cost, right? So now in if you are talking about particularly about the production, then it is being used as a noun. So now let's see rise. The production cost rose to their highest level of the year in July, and the rise second noun is there was a rise in production cost to the highest level of the year in July. Go up means something which is going to upward. So between 19 and 2000 the population went up. So went up is the second form of go up, right? So like because that I told you at the beginning में मैंने आपको बताया था कि आपने टेंसेस को ध्यान में रखना है. अगर इंफॉर्मेशन पास्ट के बारे में है तो पास्ट की इंफॉर्मेशन को पास्ट के तरीके से डिस्क्राइब करें. जो भी आप वोकेबलरी के वर्ड सीख रहे हैं, जैसे इंक्रीजिंग ट्रेंड भी आना है, डिक्रीजिंग भी आना है, फ्लक्चुएशंस भी आना है, प्रीपोजिशंस भी मैं आपको बताऊंगा कि ग्राफ में कैसे प्लेस करते हैं. तो हर एक के साथ में आपको जो है टेंसेस को ध्यान में रख के चलना है, और टेंसेस के साथ साथ में आपने जो वर्ब्स के एक्शन जो चेंज होंगे टेंसेस के अकॉर्डिंग, you have to focus on that as well, right? Next is the grow. So grow is like grow and grown. So that's the second and third form is stated. So the number of the first time users grew rapidly in 2015, right? So grew is the second form. So the growth is used as a noun over here. There was a rapid growth in the number of first time users in 2015. So next is increase. So what one increase is used for the verb, and one is for the noun. So the number of cyclists increased, right? कि जो number of cyclists है वो increase हुआ भाई किसमें 2005 and 2010. So like there was an increase in the number of cyclists between 2005 and 2010. So this is the use of noun. So now let's look at the down trend. So in the down one, you have the decline. So decline is the construction of new home declined for 10 years in succession, right? So what 10 years a decline hai bhai, like, so that is the use of decline. So that's a verb, and this is a noun actually. So there was a decline in the number of new homes for 10 years in succession. So go down is a verb. So after a brief rise, imports went down again. So went down, it went down. So that is the go जो है वो इसका प्रेजेंट फॉर्म है, और went down is the past form. Decrease, average test scores decrease at 3 of the schools. सेकेंड जो यूज है भाई वो एक नाउन का है. There was a decrease in test scores at the 3 of the schools. Next is drop, are the two used in the graph. So one is verb and one is noun. So first example is for the verbs. In 2008 foreign investment dropped by 20%, right? So that is a dropped by 20%. And guys difference क्या होता है, जो noun और verb है तो verb का क्या है कि वो action जो है वो tense के according change होता है, right? सो टेस्ट के अकॉर्डिंग जो चेंज होता है, लेट्स टेक एन एग्जांपल. अगर पास्ट है तो पास्ट में अगर बात करोगे उस ट्रेंड की, तो ट्रेंड के अकॉर्डिंग जो है उसका वर्ब चेंज हो जाता है, एक्शन चेंज हो जाएगा, उसका सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म आप लगाते हैं. बट जब आप एक पर्टिकुलरली नाउन की बात करते हैं तो नाउन में कभी भी वर्ब का चेंज नहीं होता. इधर आप पास्ट एक्सप्लेन कर रहे हो, प्रेजेंट एक्सप्लेन कर रहे हो या फ्यूचर एक्सप्लेन करोगे, तो वहां पे नाउन के साथ में कभी भी वर्ब, नाउन के साथ में छेड़छाड़ करना नहीं है आपने. तो कभी आप नाउन और वर्ब दोनों को ही चेंज करने लग जाओ. जहां पे आप नाउन के बारे में बात करोगे तो नाउन क्या होता है भाई, नेम ऑफ अ थिंग, पर्सन, प्लेस और एनी आइडिया.
राइट तो जब आप किसी चीज को एक्सप्लेन कर रहे हो तो बीइंग एज अ नाउन आप उसको एक नाउन में एक्सप्लेन कर रहे हो तो वहां पे उसमें वर्ब्स की फॉर्म मत आप ऐड करना वर्ब की फॉर्म सिर्फ एक्शंस के अंदर रिक्वायर्ड है मेकिंग यू अंडरस्टैंड Sitruth, Sunil, thanks a lot for your compliment, my dear. So next is their fell. So again, the fell is for the verb and noun. Both are stated over here. So like fell, felon. So that's stated there. So number of overseas students fell in 2013, and there was a fell in the number of international students in 2013. So now let's look at the prepositions of time. Guys, सबसे important IELTS को writing task के अंदर है प्रीपोजिशंस बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं ग्राफ बहुत अच्छा लगते हैं लिखते हैं परफॉर्मेंस बहुत आउटस्टैंडिंग होता है बट कहीं ना कहीं जो उनका प्रॉब्लम रहता है वो प्रीपोजिशंस की प्लेसमेंट में रहता है कि कहाँ पे इन उनका आएगा कहाँ पे ओन आएगा सो ये आपने काफी ध्यान रखना है सो लाइक लेट्स टेक एन एग्जांपल मैं आपको इसको एक्सप्लेन करने से पहले एक एग्जांपल देना चाहूंगा आप एक चेयर पे बैठे हैं और चेयर पे कोई भी आर्म्स नहीं है उसके रेस्ट आर्म्स नहीं है चेयर पे सो लाइक यू वुड से आप वहां पे बोलेंगे लेट्स टेक एन एग्जांपल ही इज सिटिंग ऑन द चेयर ही इज सिटिंग ऑन द चेयर सो व्हेन द आर्म्स रेस्ट आर्म्स आर देयर तो हम वहां पे बोलेंगे ही इज सिटिंग इन द चेयर दोनों ही पोजीशन में बैठा तो वो चेयर पे है एक में आपने ऑन लगाया है एक में आपने इन लगाया है ऑन कहां पे लगाया है जहां पे सरफेस है उसका लेकिन कोई रेस्ट आर्म्स नहीं है तो वहां पे ऑन द चेयर आएगा और जब रेस्ट आर्म्स उसके पास में है दोनों उसके लाइक वो एक बॉक्स टाइप बन जाता है फिर वो चेयर जो है दैट इज एन अ काइंड ऑफ बॉक्स एक्चुअली क्योंकि दोनों साइड से वो कवर होता है तो वहां पे आप इन का यूज करते हैं तो पोजीशन दोनों बैठने की है फर्क सिर्फ कितना है एक में इन लगा है एक में ऑन लगा है दैट डिपेंड्स कि पोजीशन किस हिसाब से है सो प्रीपोजिशन का भी सिमिलर यूज होता है सो दैट्स लेट्स लुक एट द यूज ऑफ प्रीपोजिशन ओवर हियर सो नाउ लेट्स लुक एट द यूज ऑफ एट का जो यूज है भाई दैट इज टाइम ऑफ डे सो लाइक फॉर एन एग्जांपल एट आफ्टरनून or like at 8 a.m. On is used for day or like date or day of the week. So like on 1st October on Monday, right? On 1st October on Monday. तो ये date और जो day of the week है दोनों के लिए on लगता है in. Month में season ईयर डेकेड सेंचुरी डेकेड 10 इयर्स के पीरियड को डेकेड बोलते हैं सो लाइक सेंचुरी 100 इयर्स का होता है डियर ऑल्दो आप सभी को पता होगा बट स्टिल इट्स माय ड्यूटी टू एक्सप्लेन यू सो लाइक मंथ सीजन ईयर डेकेड एंड सेंचुरी इन जून इन समर राइट सो लाइक इन जून इट्स अ मंथ एक्चुअली इन द समर सो इट्स अ सीजन in 2014 is a year in the 90s right so that's like you can talk about a decade so like in the 21st century so that's a century over here use of for is used for a period of time एक समय के period के साथ में जो use किया जाता है so that is used for 10 years for the next several months right so you will use for there by before or at specific point in time आप कहीं भी किसी भी पोजीशन में या पहले या किसी स्पेसिफिक पोजीशन पॉइंट के बारे में बात करते हैं टाइम की तो वहां पे आप बाय का आप यूज करते हैं बाय 10 अप्रैल बाय द एंड ऑफ 2016 until up to a certain point कहीं पे कोई एक पॉइंट होता है भाई राइट फॉर एन एग्जांपल आई विल नॉट गिव यू मनी अंटिल यू गिव मी वेजिटेबल्स राइट जब तक आप मुझे वेजिटेबल नहीं दोगे मैं आपको पैसा नहीं दूंगा राइट तो वहां पे क्या है कि एक सर्टेन पॉइंट है कि भाई मुझे वेजिटेबल पहले चाहिए फिर मैंने पैसा देना तो वहां पे आप अंटिल का यूज करेंगे सो लाइक अप टू अ सर्टेन पॉइंट अंटिल 31st December or until 2020 until the begin of 2014 so this is the use of word of until from का क्या है to or between एंड स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट राइट स्टार्ट होने से लेके और एंड होने तक अगर किसी आप पॉइंट के बारे में बात करते हो तो वहां पे आप सॉरी फ्रॉम का आप यूज करेंगे फ्रॉम 2001 टू 2015 राइट 2001 से 15 तक बिटवीन 1st जनवरी एंड 31st जून राइट कि 1st जनवरी से और 31st जून तक जब आप दो के बारे में बात करते हैं टू और बिटवीन टू थिंग्स में तो वहां पे आप फ्रॉम का आप यूज करेंगे
बिफोर एंड आफ्टर, राधिका थैंक यू। सो लाइक बिफोर एंड आफ्टर का आप कहाँ पे यूज करेंगे भी, प्लस इन टाइम, जब आप टाइम में प्लस लेके चलते हैं या आफ्टर लेके चलते हैं तो वहां पे आप जो क्या है बिफोर 5 p.m. आफ्टर 19th century, right? So there, that is the use of before and after. Further is around. Around is used for the period of time or point in time, right? आप एक किसको पीरियड ऑफ टाइम के लिए भी यूज करते हैं, पीरियड ऑफ टाइम के लिए फोर भी यूज होता है, जहां पे आपने मान लो एक सेंटेंस में फोर का यूज किया है, दोबारा फिर आपने किसी पीरियड के बारे में एक्सप्लेन कर रहे हैं तो वहां पे आप अराउंड लगाएं। जहां पे आपने पहले मान लो आपने अराउंड का यूज किया किसी पीरियड के लिए, सेकेंडरी जो पार्ट होगा वहां पे आप फोर का यूज कर लें। तो इतना इंटेलिजेंट आपको होना पड़ेगा कि मैंने कौन सा वर्ड यूज किया है और किसका टर्म अभी आने वाला है। पॉइंट इन टाइम, अब जब कोई एक पॉइंट इन टाइम होता है तो वहां पे भी आप अराउंड का यूज करेंगे। फॉर एन एग्जांपल अराउंड 1997 for like around 6 months, right? So like that's a quite of period there. Next is during. During is द ड्यूरेशन ऑफ अ पीरियड ऑफ टाइम, राइट? ड्यूरिंग का आप किस में यूज करेंगे, एक समय की जो अवधि होती है, एक समय का जो पीरियड होता है उसके अगर ड्यूरेशन उसके दौरान में जो आप यूज करते हैं, सो दैट इज कॉल्ड ड्यूरिंग। ड्यूरिंग 1980s, ड्यूरिंग द विंटर, ड्यूरिंग द अप्रैल, ड्यूरिंग द रेनी सीजन, ड्यूरिंग द कोविड-19 टाइम। सो यू कैन टॉक अबाउट डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ एग्जांपल फॉर द वर्ड ऑफ ड्यूरिंग। और ये मैं आपको सभी इसलिए बता रहा हूं क्योंकि लाइन ग्राफ में इनकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। Further is look at the graph about the number of university applications and write sentences with sentences. Guys, sorry I missed the graph over here, but anyways I will still explain you. So the word in brackets write about the main trends in the point. So like first जैसे कि आप rise के बारे में बात करते हो, the number of applications received by the university in 1990 and 2005, ये उसका इंट्रोडक्शन है ग्राफ का, वो यहाँ पे ग्राफ नहीं है एक्चुअली, सॉरी फॉर दैट। सो सेकंड जो पॉइंट था क्लिम टू, क्लिम टू का मतलब क्या होता है भाई, इंक्रीज होना। अब क्लिम टू का मतलब क्या है कि मान लो कोई इंफॉर्मेशन जैसे 20% तक चला जाता है, सो एक्स वाई जेड इंक्रीज क्लिम्ड टू 20%, राइट? सो नेक्स्ट इज फॉल इन। तो फॉल का मतलब क्या भाई, डिक्रीज हो जाना, कोई परसेंटेज स्टूडेंट्स का वो अगर रेशियो डिक्रीज होता है, सो दैट इज कॉल्ड फॉल इन। डिक्लाइन जो कि है लाइक फॉर एन एग्जांपल द परसेंटेज ऑफ एक्स वाई जेड डिक्लाइंड ड्यूरिंग 2004 एंड 5, राइट? तो अभी ड्यूरिंग का मैंने आपको यूज भी बताया था। So fluctuate between and, right? So the ratio of XYZ fluctuated between 2008 and 2009. सो नेक्स्ट इज देयर लेवल ऑफ। लेवल ऑफ का मतलब क्या होता है भाई, बिल्कुल बराबर भी हो जाना को लेवल ऑफ बोलते हैं। अगर मान लो कोई रेशियो 50% है, अगर वो 50% से लाइक कोई भी रेशियो 48% या 49%, राइट, 48-49 के आसपास चला जाता है तो उसको भी लेवल ऑफ हम बोल देते हैं। सो लाइक द नंबर ऑफ कंप्यूटर ऑपरेटर्स लेवल्ड ऑफ इन 2004, राइट? कि जो नंबर ऑफ कंप्यूटर्स ऑपरेटर हैं वो लेवल्ड ऑफ कर जाते हैं 2008 के अंदर। नेक्स्ट इज ड्रॉप एंड आफ्टर, सॉरी रीच अ पीक और अराउंड। तो पीक क्या भाई, जो वो टॉप पे कहीं पहुंच जाता है, सो दैट इज कॉल्ड रीच अ पीक। एंड नेक्स्ट इज ड्रॉप एंड आफ्टर, दैट आई टोल्ड यू डिक्लाइन होता है। स्टे एट द सेम और फ्रॉम टू, सो लाइक द रेशियो ऑफ एक्स वाई जेड रिमेन्ड द सेम फ्रॉम 2004 टू 2008। तो वहां तक वो क्या भी 4 से और 8 तक वो बराबर रहता है। सो दैट्स एन रेशियो दैट यू कैन टॉक अबाउट। Further is there the adverbs and adjectives. Guys, adverbs and adjectives are very necessary. So adverbs and adjectives are the spices of English language, right? जैसे आपके तड़का किचन में आप लगाते हैं, स्पाइसेस के साथ में मसाला टेस्ट से इंक्रीज करता है। सिमिलरली एडवर्ब्स और जो एडजेक्टिव्स हैं वो आपकी इंग्लिश लैंग्वेज का जो स्टैंडर्ड है, रिटर्न जो स्टैंडर्ड है, उसको अगर इफ इट इज अ क्लासिक स्टैंडर्ड, आपने एक क्लासिक स्टैंडर्ड से अगर उसको लिखा है, सो फ्रॉम द क्लासिक स्टैंडर्ड इट इज गोना टू चेंज इट इन द डायनेमिक स्टैंडर्ड, राइट? क्लासिक से डायनेमिक स्टैंडर्ड में उसको वो चेंज कर देता है। सो दैट इज कॉल्ड एडवर्ब्स एंड एडजेक्टिव्स। मोटी सी परिभाषा में मैं आपको बता रहा हूं ये सब, एंड इट्स वेरी नेसेसरी टू यूज इन द ग्राफ क्योंकि स्कोर बूस्टर्स पॉइंट है एडजेक्टिव्स एंड एडवर्ब्स। सो नाउ लेट्स लुक एट देयर
अप और डाउन क्विकली, अगर कोई चीज ऊपर या नीचे जाता है, भाई अप मैंने दोनों ही साइन लगाए हैं वहां पे, अप का भी है डाउन का भी है, अगर क्विकली वो जा रहा है या नीचे हो रहा है, सो दैट इज द यूज ऑफ दैट वन. सो फर्स्ट इज rapidly. So rapidly, that is the adverb actually. The number of smartphones in use has risen rapidly over 10 years. So this is the use of rapidly. Next is rapid word, if you are using it as an adjective. So in this decade there was a rapid increase in the smartphone use, right? कि smartphones use के अंदर जो है वो काफी ज्यादा increase हुआ है. So that is a rapid. Suddenly, suddenly is a adverb, right? ध्यान रखना है guys, मैंने दोनों ही एक्शन आपको बताए हैं. एक सेम वर्ड का आपको एडवर्ब बताया है और सेम वर्ड का एडजेक्टिव बताया है. तो एडवर्ब और एडजेक्टिव में आपने कंफ्यूज नहीं होना, राइट? सो एडजेक्टिव जो है, सॉरी, एडवर्ब है, एडवर्ब वर्ब के बाद में आता है, और जो एडजेक्टिव है वो एक स्पेसिफिक उसका जो ट्रेंड है उसको डिस्क्राइब करने के लिए एडजेक्टिव लगाया जाता है. फॉर एन एग्जाम्पल मैं आपको और ज्यादा बेहतर से एक्सप्लेन कर देता हूं. एडजेक्टिव में ज्यादातर कंफ्यूजन हमें होती है. लेट्स टेक एन एग्जाम्पल. आई लाइक ऑल द कलर्स, राइट? आई लव द कलर बट black is my favorite, right? So now I'm emphasizing on the black color. black पे मैंने जो है emphasize किया है, तो वहां पे क्या है भाई, ब्लैक कलर जो है दैट इज एडजेक्टिव, वो एक एडजेक्टिव है. फॉर एन एग्जाम्पल मुझे हॉर्सेस बहुत पसंद है ना, एंड प्रैक्टिकली मुझे है भी. सो लाइक व्हाइट हॉर्स आई ट्रूली लव द मोस्ट, राइट? तो अब व्हाइट है तो दैट इज, अब हॉर्सेस के कलर्स तो काफी होते हैं, ब्राउन भी है, लाइक यू कैन टॉक अबाउट रेड, सॉरी ब्लैक कलर होता है, तो व्हाइट कलर होता है, तो व्हाइट भी काफी ज्यादा शेड्स होते हैं. तो अब मैं बात करूं कि व्हाइट कलर मुझे जो बहुत ज्यादा पसंद है, तो व्हाइट क्या है वहां पे एक एडजेक्टिव है, राइट? सो दैट इज अ थिंग. सो सडन वर्ड इज सडनली इज देयर. एम्प्लॉयमेंट फिगर्स ड्रॉप्ड suddenly during the following 10 years. so that is dropped जो है भाई, that's the third form of verb. पहले भी बताया था कि verb के बाद में adverb आता है, right? so next is there sudden. so in the next decade, so a sudden decrease in the employment figures. Next is there sharply, right? so what is sharply? Sharply is like, for an example, the price of textbooks rose sharply. and next is sharp is there was a sharp rise in the price of टेक्स्ट की, टेक्स्ट बुक्स के प्राइस में एक शार्प राइज हम देख सकते हैं. ड्रामेटिकली, ड्रामेटिकली इज एन एडवर्ब ओवर हियर. So like exports fell dramatically last year, and there was a dramatic fall in the export last year. Significantly, the property taxes rose significantly in 2014, and there was a significant rise in property taxes in 2014. Steeply, so that's like the number of people attending this event increased steeply in 2013. and next is steep, means also, so like an increase in the number of people attending the event. next is measure. so measure expansion of the company marketing depending is, sorry, department is accepted in the like next few years. so that's the use of adjectives and adverbs. so now let's look at the words that are used for up or downs more slowly, right? कोई रेशियो अगर बहुत ज्यादा लाइक मोर स्लोली अगर कुछ चीज चलता है, तो अप और डाउन के वर्ड्स का हम यहाँ पे यूज सीखने वाले हैं. सो एडजेक्टिव्स यहाँ पे हैं और एडवर्ब्स भी हैं. फर्स्ट इज steadily, so that's the adjective actually. the number of tourists visiting the park rose steadily. next is there steady, so like the park experience a steady increase in the number of tourists. कि number of tourists में जो है एक steady increase देखा जा सकता है. gradually भी धीरे होता है भाई. so the population of the province gradually decline, की gradually धीरे धीरे उसका population जो है वो decline हो रहा है. so there was a gradual decline in the population of the province, की एक जो ग्रेजुअल डिक्लाइन है वो एक पॉपुलेशन प्रोविनेंस के अंदर वही देखा जा सकता है. सो दैट्स देयर. नेक्स्ट इज देयर स्लाइटली बस फेयर्स, राइट, मे गो अप स्लाइटली. गो अप ऊपर जाना होता है राजे, एंड फेयर्स किराए को जब हम बोलते हैं दैट इज कॉल्ड फेयर्स एक्चुअली. बस फेयर्स मे गो अप
slightly, तो वो धीरे से क्या है भाई, वो अप हो रहे हैं. एंड एडजेक्टिव स्लाइट इज देयर इज अ स्लाइट, ए स्लाइट इंक्रीज इन बस फेयर इज एक्सपेक्टेड, कि बस फेयर्स के अंदर एक एक्सपेक्टेड हम जो है बस फेयर्स का जो एक एक्सपेक्टेड इंक्रीज है वो देख सकते हैं. माइनर, सो माइनर इज देयर वाज अ माइनर फ्लक्चुएशन, there were minor fluctuations in the value of raw materials, right? तो माइनर का यूज कहाँ पे होता है भाई, जहां पे बहुत कम होता है, राइट? मान लीजिए 5% है या 4% है या 3% है या 2% है, सो दैट इज कॉल्ड अ माइनर एक्चुअली. और जो आपके टोटल का, ये तो मैंने आपको एक लास्ट फिगर बताया है, अगर आपके टोटल का अब अगर आपके पास में टोटल है, मान लीजिए आपके पास में टोटल 5 फिगर है, राइट? 1 2 3 4 एंड 5. तो 5 है, लेट्स टेक एन एग्जांपल कि पहला जो है वो 80 है, दूसरा 70 है, तीसरा जो है वो 50 है, और पांचवा जो फोर्थ जो है वो आपका 40 है, और फिफ्थ जो है आपका 30 है. तो यू कैन टॉक अबाउट a minor number of people are interested, तो वो माइनर टोटल के हिसाब से वो कम है, तो आप माइनर का यूज वहां पे भी कर सकते हो. दूसरा माइनर के साथ में, इसके साथ में जो वर्ड यूज होता है, मेजोरिटी का हम यूज कर लेते हैं. Next is there describing projections. Projections are very necessary to understand. Projections, some line graph make predictions about future. कुछ जो लाइन ग्राफ हैं वो फ्यूचर के बारे में होते हैं, और जब बात फ्यूचर की आती है, वो एक प्रिडिक्टेड टाइम होता है, तो वहां पे स्टूडेंट जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस को यूज करते हैं, या विल का अगर उन्होंने यूज कर लिया, बट स्टिल उसके अंदर उनका गलती रहता ही रहता है. सो इट्स वेरी नेसेसरी टू अंडरस्टैंड द प्रोजेक्शंस को कैसे एक्सप्लेन करना है. सो लेट्स सी नाउ. When you are describing a projection, you should use language that indicates that these activities take place in future and that data is uncertain. So what does it mean? जब आप किसी projection को explain कर रहे होते हैं, तो वहां पे जो आपको language करना है use, तो वो language इंडिकेट करना चाहिए, उस वो जो आप लिखा हुआ सेंटेंस है वो इंडिकेट करना चाहिए, उस सेंटेंस को इंडिकेट करेगा कि ये जो एक्टिविटी मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं ये फ्यूचर के बारे में, राइट? सो दैट इज कॉल्ड अनसर्टेन. और ये जो डेटा है वो अनसर्टेन है, क्योंकि फ्यूचर हमेशा अनसर्टेन होता है, इट इज नॉट सिक्योर्ड. as lot of people might have learned a lot of things in 2020, but you know like what is being happening now, so it's ये एक uncertain point है. कोविड-19 एक अनसर्टेन है, इट्स नॉट सर्टेन. तो ये प्रोजेक्शन जब भी आप फ्यूचर की करते हैं, सो दैट इज अ अनसर्टेन. और जो सेंटेंस है उनका जो मोटिव रहना चाहिए वो इंडिकेट करते हो कि जो एक्टिविटी आप प्रेजेंट कर रहे हो ये फ्यूचर के बारे में. सो नाउ लेट्स लुक एट माइट प्लस इन्फिनेटिव. So might plus infinitive, the cost of doing business in country B might rise next year. कि जो कॉस्ट है भाई बिजनेस करने की कंट्री बी के अंदर वो राइज कर सकते हैं. तो माइट मींस दैट इज नॉट अ श्योरिटी, राइट? डाउटफुल कंडीशन है, सो दैट्स द माइट. और वर्ड्स भी हैं वो इतने सोफिस्टिकेटेड आपने फ्यूचर के लिए यूज करना है. फ्यूचर के लिए जब भी आप ग्राफ एक्सप्लेन कर रहे हो तो वहां पे आप सर्टनली वर्ड का, डेफिनेटली वर्ड का, ऑब्वियसली वर्ड का, शेल का, आप इनका यूज बिल्कुल कतई नहीं करेंगे. एंड यू मस्ट अवॉइड इट, राइट? क्योंकि फ्यूचर इज नॉट अ सर्टेन, पहला ही सेंटेंस मैंने बताया था, इट्स अ अनसर्टेन. बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं वहां पे डेफिनेटली, लाइक यू कैन टॉक अबाउट सर्टनली. तो कुछ स्ट्रॉन्ग जो वर्ड हैं, जो एक जो प्रोजेक्शन है, जो वर्ड्स आपकी प्रोजेक्शन को स्ट्रॉन्ग करते हैं, तो लाइन ग्राफ में आइल्स में आप वो ना लिखें, क्योंकि वो एक पहले बार बार रिपीट कर रहा हूं कि अनसर्टेन है. और इस पे इसलिए एम्फेसाइज कर रहा हूं क्योंकि सबसे ज्यादा ग्रे एरिया है आइल्स राइटिंग के अंदर, राइट? जब फ्यूचर की बात आती है तो वहां पे मिस्टेक्स होने के चांसेस जो हैं वो डबल हो जाते हैं. दैट्स व्हाई आई एम एम्फेसाइजिंग ओवर इट. सो विल मींस प्रोबेबली, right? Sorry, may infinitive है. So like government revenue may go down, right? तो may go down means it may go down or might not go down, right? So surety is not there during the next quarter. Will means the probably, infinitive आप उसके साथ में यूज करेंगे. According to the graph, the number of websites will probably double over the next few years, right? तो ये सेंटेंस जो है ये इसी का पार्ट है, वो अलग नहीं है. समटाइम्स जैसे पीपीटी बनाते हैं तो वो स्प्लिट हो जाता आगे पीछे, so sorry for that.
So according to the graph, the number of websites will probably double over the next few years is the probably and going to plus infinitive का आप उसके अंदर यूज करेंगे. There is probably going to an increase in the number of television dramas this autumn, right? So there is probably going to be an increase. So probably going to, it is in a roughly estimate actually, probably, right? So there is in a probably going to be an increase in the number of television dramas this autumn. Next is noun and plus is predicted, right? A sudden increase in the tourists is predicted. A sudden increase in the tourist is predicted when something is predicted. So like is predicted plus 2 plus infinitive, right? So like the number of tourists is predicted to rise, right? So like to rise is an infinitive actually. So next is their noun plus is expected. So like that is a decline in the average age is expected. Next is noun plus is expected plus 2 plus infinitive. The average age is expected to go down. So the average age is expected to go down. So that is the use of like noun plus expected plus 2 plus infinitive. और जितने ये वर्ड्स मैंने आपको बताए हैं सिर्फ फ्यूचर प्रोजेक्शन के लिए यूज होते हैं. एंड गाइस जस्ट ट्रस्ट मी, ग्राफ में इससे बढ़ के होता भी कुछ नहीं है. सो इट इज एक्सपेक्टेड दैट प्लस आप एक क्लॉज का यूज करेंगे भाई. सो इट इज एक्सपेक्टेड दैट द एवरेज एज विल डिक्रीज, राइट? सो जो एवरेज एज है वो एक डिक्रीज होगा. दैट्स एन अ क्लॉज एक्चुअली. सो लाइक इट इज एक्सपेक्टेड दैट, तो आप वर्ड्स का यूज करेंगे माइट, मे, will, sorry, is noun plus like predicted. So next is there is predicted and noun plus is like expected and noun plus is expected plus infinitive. So now let's turn to same. जब हम एक लेवल की बात करते हैं, कुछ मान लो अगर 50% था, अगर वो 50 का 50 ही रहता है, देयर इज नो चेंज, तो वहां पे आप किसका यूज करेंगे? स्टे द सेम. कंपनीज मार्केट शेयर द लाइक स्टे द सेम. सो रिमेन द कांस्टेंट. रिमेन द कांस्टेंट का मतलब भी क्या होता है भाई? बराबर रहना होता है रिमेन द कांस्टेंट. सो लाइक रिमेन द कांस्टेंट 3 months, सो द परसेंटेज रिमेन्ड कांस्टेंट. जो परसेंटेज वो बिल्कुल बराबर रहता है. नेक्स्ट इज देयर अप के लिए, डाउन के लिए, अप के लिए, फिर डाउन के लिए, मींस दैट इज द फ्लक्चुएशंस एक्चुअली. जो चीज अप जाती है पहले डाउन आती है, फिर अप जाती है, फिर डाउन आती है. जो पॉइंट एक बार अप गया, फिर डाउन आया, फिर अप गया, तो इस रेशो को लेट्स टेक एन एग्जांपल. ये सबसे पहले ऊपर है, फिर ये नीचे आया, फिर ऊपर आया, फिर नीचे आया, तो ये क्या है? दिस इज कॉल्ड फ्लक्चुएशन. इसको हम फ्लक्चुएशन बोलते हैं, राइट? So that is called fluctuation. Further is there fluctuate. So fluctuate is a number of seasonal workers employed by the company fluctuates each year. So the first word is fluctuate there. So the number of seasonal workers employed by the company fluctuates each year. Next is fluctuation. There have been fluctuations in the number of seasonal workers employed by the company. Next is go up and down, right? Fares have gone up and down over the last few months, so that is a go up and down. Next is there the graphs. So I'll be dictating you complete graph by taking your short time. So like the graph below gives information about how much people in United States and the United Kingdom spent on fuel, right? So the graph below gives you information about how much people in the United States and the United Kingdom spent on fuel. So now let's look at over here. So the percentage of income is here, and this is for the black one is for the United States and this gray one is for the United Kingdom. So there are the 3 categories. So that's the poorest, middle income and the richest, right? So now let's turn to the main graph. So let's see the main graph. The graph compares the percentage
income that people in the UK and USA spent on fuel. So the graph compares the income, क्योंकि यहाँ पे भाई जो है परसेंट ऑफ इनकम की बात हो रही है, तो ये क्या कर रहा है, इनकम को कंपेयर कर रहा है, राइट। तो इनकम अगर दोनों की कंपेयर हो रही है तो यहाँ पे इनकम की बात हो रही है। द ग्राफ कंपेयर्स द इनकम। इंट्रोडक्शन आप देख लें किस तरीके से फॉर्म की गई है, आप एक बार बैक से जाके पढ़ लें, राइट। सो द इंफॉर्मेशन इज दिस, आप ध्यान से एक बार इसको पढ़ें। द ग्राफ बिलो गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट हाउ मच पीपल इन द यूनाइटेड स्टेट्स एंड हाउ एंड द लाइक यूनाइटेड किंगडम स्पेंट ऑन फ्यूल। तो इसको हमने पैराफ्रेज कैसे किया है, दिस इज पैराफ्रेजिंग, राइट। तो इसको पैराफ्रेजिंग बोलते हैं, इसको इस तरीके से पैराफ्रेज किया गया भाई। द ग्राफ कंपेयर्स द परसेंटेज इनकम दैट पीपल इन द यूनाइटेड किंगडम, यूके आपने यूनाइटेड किंगडम को यूके किया है और यूनाइटेड स्टेट्स को आपने, अमेरिका को आपने कर दिया यूएसए, स्पेंट ऑन फ्यूल। Next is there, firstly, the differences between the total spending on fuel by the poorest and richest. तो यहाँ पे poorest और जो richest है उन दोनों को कंपेयर किया गया, फर्स्ट मिडिल को नहीं लिया गया। सो फर्स्टली द डिफरेंस बिटवीन द टोटल स्पेंडिंग ऑन फ्यूल बाय द poorest and the richest is greater in UK than in the USA, राइट। कि यूके और यूएसए के अंदर भाई जो है सॉरी फॉर द इंटरप्शन। सो फर्स्टली द डिफरेंस बिटवीन द टोटल स्पेंडिंग ऑन फ्यूल, कि जो पहला जो है भाई वो जो टोटल स्पेंड है फ्यूल का वो पूरेस्ट एंड रिचेस्ट के बीच में है, इज ग्रेटर इन द यूके, कि वो यूके के अंदर ज्यादा है देन इन द यूएसए। इन द फॉर्मर the poorest spent less than 0.5 their income on fuel, suggesting that they do not use cars very much, and the richest spent around 3%, right। तो richest जो है वो वही around 3% spend करता है उसके अंदर। by contrast in the US, by contrast means जबकि दूसरी तरफ in the US the poorest spent around, जो poorest है भाई वो कितना spend करता है, around spend between 2 to 3%। next is there, secondly, in the US it is also noticeable that the percentage of income spent by the poor can be twice, वो डबल है भाई, twice का जो डबल के लिए यूज किया गया है, that spent by the rich। however in the UK the percentage spent rise quite steeply, right। तो वो धीरे धीरे करके क्या भाई वो like rise है for the poor members of the population, but remains almost constant apart from the very richest where it fell again। next, in both countries people in the middle incomes, right। so now we are talking about the middle income over here, right। so middle income is there, so like in the both countries people in the middle income spent about some percentage। so overall is what, guys, this ratio is for the poorest and this is for the middle and this is for the richest। तो ये फिगर्स आपने उसी के अकॉर्डिंग करने हैं। सो इन बोथ लाइक ओवरऑल द परसेंटेज ऑफ इनकम स्पेंट ऑन फ्यूल जनरली गेट्स हायर इन द यूके। वो जनरली क्या है भाई, वो हायर किसके अंदर रहता है भाई, फ्यूल के अंदर है। स्पेंट ऑन फ्यूल गेट्स द रिचेस्ट लाइक हायर इन द यूके, वेयर इज डिक्रीज इन द यूएसए। तो यूएसए के अंदर क्या है भाई वो डिक्रीज रहता है और जो है यूके के अंदर जो है वो higher रहता है। so now let's look at the next graph। so next is there the population in India plus and China, right। 2000 and 2050। अब यहाँ पे प्रोजेक्शन की भी बात होगी और प्रेजेंट की, पास्ट की भी बात होगी, तो ध्यान से आपने देखना है प्रोजेक्शन को किस तरीके से एक्सप्लेन करते हैं। सो दिस ब्लू लाइन इज फॉर द इंडिया एंड द पिंक वन इज फॉर द चाइना। सो the population is given in the billions, so 1 billion to 1.7 billion is there। so 2000 and 2050 is over here। so 2020 it's a current year and these are the predicted year 2030, 40 and 50। so the graph shows how the population of India and China have changed since 2000 and how they will change in the future। तो दोनों ही पॉइंट आपने स्टेट करने हैं। यहाँ पे जब इंट्रोडक्शन बच्चा फॉर्म करता है तो गलती कर देता है, वो अपने ग्राफ को इंफॉर्मेशन को इस हिसाब से प्रेजेंट करते हैं। द ग्राफ शोज हाउ द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया एंड चाइना हैज चेंज्ड या विल चेंज या फ्रॉम 2000
टू 2050, तो आप अगर ऐसा लिखेंगे तो ये ग्रामेटिकली सेंस से बिल्कुल रॉन्ग है। आपने पास्ट को अलग डिफाइन करना है, प्रेजेंट फ्यूचर को अलग से करना है। मींस आप एक कनेक्टर जो है कंजक्शन एंड का आप यूज करके उसको एक सिंपल सेंटेंस फॉर्म कर दें, जैसे कि स्टेटेड है, द ग्राफ शोज द populations of the India and China have changed since 2000 and how they will change in the future. In 2000 there were more people. यहाँ पे ध्यान रखना है टेंसेस का। टेंसेस कैसे, अब बात हो रही है 2000 के बारे में, तो इसलिए किसका यूज किया भाई, वर का यूज किया है। इन 2000 there were more people living in China than India, कि 2000 के अंदर जो है वो ज्यादा लोग किसके अंदर थे भाई, लिविंग इन चाइना देन इंडिया। अब इंडिया के अंदर कितना था, दैट इज 1 बिलियन, और चाइना के अंदर इट वाज लाइक मोर देन 1.2, तो वहां पे उनका ज्यादा था। द नंबर ऑफ चाइनीज वाज 1.25 बिलियन, तो वाज किसके लिए लगा है भाई, क्योंकि हम बात 2000 के बारे में बात करें, पास्ट के बारे में बात करें, 1.2 बिलियन। और गाइज अगर आप एग्जैक्ट फिगर नहीं निकाल सकते कि 1.25 है या 1.35 है, तो वहां पे अप्रोक्सीमेटली आप कर सकते हैं, अप्रोक्सीमेटली, नियरली, क्लोजली, नियर बाय। सो आप इन जो है वर्ड्स का, एस्टिमेटेड वर्ड्स का अगर आप यूज करके करेंगे तब भी वो गलत नहीं होगा, राइट। तो यहाँ पे आप मोर देन और लेस देन का भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि लाइक द नंबर ऑफ चाइनीज वाज मोर देन 1.2 मिलियन, राइट, मोर देन 1.2 मिलियन एंड लेस देन 1.3, तो वहां पे फिर भी आपका जो फिगर है वो बहुत अच्छे से आपने उसको स्ट्रेट कर दिया। अगर आप उसको एग्जैक्ट फिगर आप नहीं निकाल सकते क्योंकि स्केल्स एग्जाम में अलाउड नहीं होते। सो लाइक व्हाइल इंडियाज पॉपुलेशन वाज अबाउट 1 बिलियन, राइट। अब यहाँ पे अबाउट वर्ड का यूज किया है, तो अबाउट वर्ड का यूज किया है, तो ये तो कहने कि वो एग्जैक्टली 1 बिलियन था, राइट, तो वो ऊपर नीचे भी हो सकता है। सो बिटवीन 2000 एंड 2010, सो यहाँ पे भाई 2000 से 2010 तक देयर हैज बीन, तो वहां पे क्या हुआ भाई, 0.2 राइज इन द नंबर ऑफ इंडियन सिटीजन्स, राइट। सो 0.2 का जो है वो राइज है भाई 2000 से 2010 तक का, हम देख सकते हैं। तो देयर वाज 0.2 राइज इन द इंडियन पॉपुलेशन। सो नेक्स्ट इज ओवर द सेम पीरियड के अंदर क्या है भाई, Chinese population has increased by 0.1 billion, reach over 1.35, right, तो 1.35 बिलियन उनका पहुंच जाता है। According to the graph, the population in India will increase more quickly, तो जो ग्राफ के अकॉर्डिंग जो है भाई, एक ओवरव्यू सेंटेंस आप दे रहे हैं फ्यूचर में, फ्यूचर के लिए, अकॉर्डिंग टू द ग्राफ द पॉपुलेशन इन इंडिया विल इंक्रीज मोर क्विकली, तो इंडिया के अंदर जो परसेंटेज है वो ज्यादा क्विकली इंक्रीज होगा। अब आप देख सकते हैं कि ये 2020 का रेशो है 20, लाइक 20 का रेशो है। सो दिस ब्लू लाइन इज फॉर इंडिया एज आई टोल्ड यू, और आप देख भी सकते हैं उसके अंदर, और जो ये है भाई दिस इज फॉर चाइना। अब चाइना के बारे में है, तो इंडिया का जो पॉपुलेशन है वो एक इंक्रीजिंग ट्रेंड है, ऑल दो जो चाइना का है वो एक डिक्लाइनिंग ट्रेंड है। सो आपने इसका एक ओवरव्यू दिया है कि अकॉर्डिंग टू द ग्राफ द पॉपुलेशन इन इंडिया विल इंक्रीज मोर क्विकली देन चाइना, एंड एक्सपर्ट सेज दैट, वो क्या बोलते हैं भाई, बाय 2030, 2030 तक। गाइज आप एक एक साल नहीं लिखेंगे उसके अंदर, एक एक अगर आप एक्सप्लेन करोगे तो वो काफी ज्यादा लेंदी हो जाएगा, तो लेंदी होगा तो ग्राफ में वर्ड्स डिडक्शन काफी ज्यादा, बैंड डिडक्शन काफी होता है वर्ड नंबर एक्सीड होने के कारण। सो experts say that like by 2030 the both country will have the same population, right, 2030 तक। अब अगर आप 30 का अगर रेशो देखिए तो दिस इज फॉर 2030, तो लगभग क्या भी ये बराबर का एक रेशो उनका है 2030 तक। एंड लाइक ऑफ द बोथ कंट्रीज विल हैव द सेम पॉपुलेशन, कितना रहता है भाई 1.4 बिलियन। आफ्टर दिस चाइना पॉपुलेशन इज लाइकली टू फेल, तो यहाँ पे जो है 2030 का जो लाइन है, इसके बाद में अगर आप देखें तो ये एक फॉलिंग डिक्लाइन यहाँ पे इसका हो रहा है, तो यहाँ पे एक स्लाइटली फॉल हम उसके अंदर देख सकते हैं 1.4 बिलियन टू 2050 तक उनका रहेगा भाई। एंड इन 2050 वाइल जो इंडिया का पॉपुलेशन है विल प्रोबेबली इंक्रीज। अब मैंने आपको ग्राफ के अंदर बताया था कि प्रोबेबली वर्ड का कैसे यूज करते हैं, प्रैक्टिकली आप यहाँ पे सेंटेंस में भी देख सकते हैं, प्रोबेबली इंक्रीज एंड रीच 1.5
6 billion. So thus over the 50-year period, right, जो 50 साल का total जो period है भाई, India is going to experience steady growth in its population, right, कि एक जो population के अंदर growth है भाई, एक steady growth देखा जाएगा इंडिया के अंदर and will overtake China, तो जो कि भी चाइना से ऊपर चला जाएगा. एंड ऑन द अदर हैंड चाइनीज पॉपुलेशन विल पीक इन 2030. 2030 में उनकी पॉपुलेशन पीक पे जाएगी एंड देन बिगिन टू फॉल. तो उसके बाद में वो फॉल होना स्टार्ट हो जाएगा. यहाँ पे विल का यूज है, शेल का यूज नहीं है, डेफिनेटली का यूज नहीं है, सर्टेनली का यूज नहीं है, क्योंकि वो एक प्रोजेक्शन है. दैट्स व्हाई वी हैव यूज्ड द वर्ड will. Now let's look at the table graph. As I told you, we are going to discuss the two sorts of tables, like graph, table and line graph. So please stay tuned up with me, like I'm just about to finish with my task. So the table below gives information about the student enrollment in the Manchester University in 1937, 67 and 2017, right? So like first is 1937, next is 1967 and next is 2017. How many new students enrolled? So this is for the new one. So like what's percentage female, what percentage for male, and like what percentage came from within the 40 million of Manchester and what percentage came from overseas, right? So that's the ratio over here. So the given table illustrates the number of students enrolling at the Manchester University in 3 years. तो कौन कौन से भाई 37, 67 and 2017. So it compares the percentage of, ये किसको compare कर रहा है भाई, मेल्स और फीमेल्स की परसेंटेज को कर रहा है. ये मेल और फीमेल का परसेंटेज हो गया. And also the student from abroad and those within the like 40 miles of the city. तो ये एक 40 mile cities का है और ये abroad student का. तो ये compare करेगा to measure things को, न्यू स्टूडेंट्स को, और उसके साथ साथ में भाई लाइक मेल और फीमेल के रेशियो को, और दूसरा जो स्टूडेंट 40 माइल्स के विद इन द सिटी हैं और जो ओवरसीज के हैं. नाउ लेट्स लुक एट दिस. द मोस्ट नोटिसेबल चेंज कंसर्न ओवर द ग्रोथ ऑफ स्टूडेंट नंबर फ्रॉम 327 in the 1917 to 6257 in 2017, and the proportion of the local student who constituted like 55% of the total in 1937 and by 1 to 2% in 2017. Further is there like it is surprising to note that the percentage of female employments did not rise steadily but dropped between 1937 and 67. So 1937 और 67 के अंदर भाई उनका एक डिक्लाइन हम देख सकते हैं. So that's the stated over here as well. However, like at the same time, the percentage of students population who came from the abroad remained almost unchanged. तो उनमें कोई भी change नहीं आता, like 6 and 7% respectively you can see over here, right? So but rose markedly क्या होगा भाई, थोड़ा सा जो है increase है, एक important increase है after that. So like by 2017 foreign students represented 32% of total, right? So that's the way to explain the table graph. Next is the next table. The table shows below gives information about UK independent films, right? So UK independent films, अब यहाँ पे बहुत सारी कैटेगरीज हैं. आप बहुत सारी कैटेगरीज जब बच्चा देखता है एग्जाम में तो वो एक बार डर जाता है कि इस इंफॉर्मेशन को लॉजिकल तरीके से मैं कैसे एलाबोरेट करूं. गाइस सबसे आसान होता है इसको करना, बट थोड़ी टेक्निक आपको जरूरत होनी चाहिए. थोड़ा सा आप अगर इसमें ध्यान से करेंगे तो इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस, आप इसको बेखूबी तरीके से कर सकते हैं. सो नाउ लेट्स लुक एट दैट. So let's see this clip now. The table provides information about different types of important film released in the UK and the Republic of Ireland in 2012. So it indicates how many films of different genres like were made by, also shows the proportion of total ticket sales made by the each kind of film, right? So the table makes it very clear. जो table है वो बिल्कुल clear करता है. There is no correlation between the number of films made in any category of the proportion of
ticket sales earned by the short of film, right? So there is no any correlation in that. For example, the largest number of films were made in the ड्रामा एंड डॉक्यूमेंट्री, राइट? सो ड्रामा और डॉक्यूमेंट्री को अगर आप देखें तो लार्जेस्ट जो फिल्म है वो ड्रामास और डॉक्यूमेंट्रीज की हैं. इफ यू वुड सी द टोटल नंबर ऑफ रिलीज, सो मैक्सिमम 35 and 35 is over here in the drama and documentary. So like for example, the largest number of films made on the drama and documentary, 35 of each, and these released. However, they earned 8.3 and 2.9% of total ticket sales respectively, right? So respectively word is used for this. So 8.3, हालांकि इनका जो रिलीज नंबर है वो बिल्कुल बराबर था, बट इनका जो इनकम है वो उसका ड्रामास का 8.3 था और जो डॉक्यूमेंट्री का दैट इज 2.9%. कॉमेडी फिल्म्स वर मोस्ट फाइनेंशियली सक्सेसफुल. जो कॉमेडी है वो ज्यादा सक्सेसफुल है भाई. 26 उनका जो है वो फिल्म्स रिलीज उनके हुए थे कॉमेडी, और जो इनकम है उनका दैट इज 45.4%. सो दैट इज द 45.4%. Next is their comedy films, 26% films of total, and comedy films were the most financially successful, 20, and out of 148, 40% of total income from the ticket sales. Another very successful Thai film in the 2012 was biopic, right? So biopic जो है वो एक another successful जो है वो फिल्म रहा है भाई. although ये one time release है बट ये मोस्टली सक्सेसफुल है. इसका अकेली का इनकम जो है वो 0.91 है. टोटल फिल्म्स की अगर देखें तो टोटल फिल्म्स के अंदर इसका जो नंबर है वो 4th पे है इनकम के मामले में, क्योंकि हालांकि ये इसने फिल्म एक रिलीज की है बट इनकम में 4th नंबर पे है, तो आप उसको एक्सप्लेन करेंगे. इट अकाउंटेड 9.4% टिकट्स, राइट? सो यहाँ पे आपने इस इंफॉर्मेशन को जो है वो स्टेटेड किया है. सो इट्स नॉट ऑलवेज नेसेसरली फॉर यू टू डिस्क्राइब एवरी शॉर्ट ऑफ इंफॉर्मेशन. आप थ्रिलिंग, रोमांस और जो अदर जो क्राइम और एक्शंस का है, अगर आप इनके बारे में स्टेट करना चाहें तो आप एक सिंपल सेंटेंस में इनके बारे में स्टेट कर सकते हैं, बट आप एक सिंपल स्टेटमेंट सेंटेंस भी लिख सकते हैं जो अगर आपने नहीं स्ट्रेट किया, आपको फिर भी लगता है कि मुझे ये चीज बता देनी चाहिए थी, तो यू कैन राइट समथिंग लाइक दिस. द अदर फिल्म्स इनकम, their number of release and sales remains quite lower as compared to comedy, drama and documentary and biopic, right? तो उनके कंपेयर में वो काफी लोअर रहते हैं. So guys, thank you so much for watching my session and thanks a million for giving your precious time. I hope you guys might have enjoyed my class, and from tomorrow onwards I'd be focusing on IELTS टास्क 2. कल से हम जो है वो टास्क 2 के बारे में एम्फेसाइज करेंगे, एंड टास्क 2 के साथ साथ में आई विल बी डिक्टेटिंग यू कि टास्क 2 में आइडियाज कैसे जनरेट होता है. ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चों को लगता है. सेकंड, उसमें ग्रामर के बारे में बात करेंगे कि किस तरीके के ग्रामर का आपको रिक्वायरमेंट है, प्लस वो कैब आपको कैसा चाहिए. सो कल का जो सेशन होगा हमारा वो टास्क 2 के ऊपर बेस्ड रहेगा कि टास्क 2 को किस तरीके से स्ट्रांगली बिल्डअप कर सकते हैं. और ये बहुत इंपॉर्टेंट एक जो है सेशन स्टार्ट होने वाला है, बिकॉज जो टास्क 2 है दैट कंटेन्स द डबल बैंड स्कोर एज कंपेयर टू द टास्क 1. थैंक यू गाइज फॉर योर support, Anil, Pinky, Manpreet, Chinky. So thanks all of you for giving your compliment, and thanks all the one. So please subscribe my channel, share and comment, and if you have not done that, so thank you so much for attending my lesson. Thanks a lot. God bless you, all of you. And you might have exam very soon for IELTS, although nothing is not clear, but you might have exams very soon, so just be ready for that. Keep your time, save and keep investing in your preparation.